Good evening, dear students. Welcome to matrixdigilearn, and today we'll discuss about the computer awareness. And the questions are on your screen. Question gudako dekho mo screen re asla. First question for you: word processing, spreadsheet, and photo editing are examples of which type of software? Word processing, spreadsheet, and photo editing are examples of which type of software? Options are application software, option B system software, option C operating system software, option D platform software, and option E none of these. Word processing, spreadsheet, photo editing एगुड़ाक को प्रकार सॉफ्टवेयर? These questions are meant for the SSC, CGL, all the banking exams, all type of exams. You can find the computer and the questions as like that. Anyone? If you know the answer, simply give your response by chat. Word processing, spreadsheet, and photo editing are examples of application softwares. Option A is the right answer. कारण एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर मान होची एया जे जहा कि कंप्यूटर रे कोनोस गोटे स्पेसिफिक काम करिया पे हमकु हेल्प करिथे बा कंप्यूटर रे कोनोस गोटे स्पेसिफिक काम हम पई करिथे ताले जो वर्ड प्रोसेसिंग कहउछ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग काम पई यूज करा जे एक्सेल को स्प्रेडशीट काम पई यूज करा जे फोटोशॉप भली जिंस अछि फोटो एडिटिंग करिया पे ताले वर्ड प्रोसेसर रे वर्ड प्रोसेसिंग काम स्प्रेडशीट रे स्प्रेडशीट काम सो कोनोसी स्पेसिफिकली काम करिया पे जेहेतु ए सॉफ्टवेयर उडा को यूज होउची. So these are the examples of application software. Okay. Which are specially designed computer chips that reside inside other devices such as your car or your electronic thermostat as known as. देखिथिबो बेले बेले स्पेशली डिजाइन करा जाय किछि कंप्यूटर चिप गुडा को जहा कि तमरो कोनोसे अन्य ओटे डिवाइस रे यूज करा जाय किंतु कार रे भी यूज करा जाय बा अन्य कोनोसी इलेक्ट्रॉनिक जिंस रे तमरो यूज करा जाय सेगुडा को हमें कौन बोली कहू? ऑप्शन ए सर्वर, ऑप्शन बी एम्बेडेड कंप्यूटर्स, ऑप्शन सी रोबोटिक कंप्यूटर्स, ऑप्शन डी मेन फ्रेम्स, एंड ऑप्शन ई नॉन ऑफ दीज. एनीवन नो आंसर्स? इफ नो, देन गिव रेस्पॉन्स बाय सिंपली चैट. क्वेश्चन नंबर 2. Which are specially designed computer chips that reside inside other devices such as your car, your electronic thermostat, that things are known as. सेडा कौन बोलिया मैं कहते हो? Anyone? Question number 2. That is known as embedded computers. Embedded means that can access many things, a large things within a small area. माने बहुत सारा जिंस गुडा का परस्पर सहित इंटरलिंक करी की अन्य गोटे जिंस भी एतरा एक्टिव करी की भी चली हबो बा अन्य गोटे डिवाइस रो जिंस को अन्य गोटे डिवाइस रो एक्टिव करी की भी चली हबो. एम्बेडेड सिस्टम हम जंतु ओएलई ऑब्जेक्ट कहूचे, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग माने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रे माने कर मो चाहूची एक्सेल स्प्रेडशीट रे हितबा कामर जिंस रो कन की इंसर्टिंग करिया पाई ताले सेटा ओएलई ऑब्जेक्ट माध्यम रे करची. दैट एम्बेडेड सिस्टम मींस that can work with the multiple platforms or multiple environments. So, see जिंसो को embedded computers बोली कहा जाए. Okay, next question for you. If you wish to limit what you would see on an Excel worksheet, what data function would you use? जदि तमे इच्छा करूचो जे तमे कोन देखिबा को चाहूचो Excel worksheet रे माने निर्दिष्ट भाबे कोन देखिबा को चाहूचो ताले एमान को भितर तमे कोनटा यूज करिवो. ऑप्शन ए शॉर्ट, ऑप्शन बी फिल्टर, ऑप्शन सी कंडीशनल फॉर्मेट, ऑप्शन डी डाटा एनालिसिस,
Option E, none of these. If you wish to limit what you would see on an Excel worksheet, what data function would you use? That thing is known as option B, filter. ताकू filter बोली हमें कहूचे. Filter means it displays only the rows or columns that satisfies the condition you specify and temporarily hides the other rows. Filter ର माने होची एये कि अनेक गुडे डाटा सेट भितरु आमे केवल सेही डाटा गुडा को देखि परिबा जहां हम कंडीशन बा शर्त रो पूर्ण करथिबो एबो टेम्पररीली भाबे अन्य डाटा गुडा का हाइडिंग करिवो. परमानेंटली भाबे नुहे, टेम्पररीली भाबे हाइडिंग करिवो. देन फिल्टर को क्लोज कला पर पुनी अदर डाटा गुडा पळे आसीबो. तले स्पेसिफिकली क्राइटेरिया वाइज देखिबा कोले हम फिल्टर ही यूज करथाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम हैज बेस 16? एमानक भितरु को नंबर सिस्टम रो बेस बा घात होची 16? ताले ऑप्शन ए यूनारी नंबर सिस्टम, ऑप्शन बी बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑप्शन सी ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑप्शन डी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एंड ऑप्शन ई नॉन ऑफ दिस. एमानक भितरु को नंबर सिस्टम रो घात होची 16? आमे सब देखिसे 2 घाती संख्या, 10 घाती संख्या, 8 घाती संख्या. ताले बेस 16 वाला जिनसोटा को एग्जैक्टली हमें कौन बोली कहू? The right answer is option D, hexadecimal system. Hexadecimal number system. ताले बाइनरी नंबर सिस्टम रे घात 2 रहे. सब किछि 2 घात रे माने सेठी केवल दुईटा अंक थाए 0 एवं 1 ताकू नै कि सब किछि एक्सप्रेशन करबा को पड़े. ऑक्टाल रे 8टा संख्या थाए जेमति कि 0 रु 7 पर्यंत. सेमति डेसिमल रे 10टा संख्या थाए 0 रु 9 पर्यंत जोटा हमें जनरली लाइफ रे व्यवहार करू. सेमति हेक्साडेसिमल रे 0 थारु 9 पर्यंत अंक सहित ए बी सी डी ई एफ एई भली कि 16टा जिंस व्यवहार करा जाय. सो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम रो घात होची 16. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएमपीएस? एसएमपीएस रो फुल फॉर्म कोन? वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. What is the full form of SMPS? Options are secure, make, potential, supply, standard, made, power, supply, switched, mode, power, supply, simplex, mode, power, supply. None of these. What is the full form of SMPS? Hints दे दूची. SMPS ता हम कंप्यूटर रे यूज करा जाय जो थ्री की पावर कनेक्शन उडा सब मिलाय थाए. तले सेटा को हमें कोन बोली कहि थाउ एग्जैक्टली? The right answer is option C. Option C is the right answer. That is switch mode power supply. Switch mode power supply. तुम देखिथिबो हमरो सिस्टम यूनिट रे गोटे बॉक्स भली जिंस लागि थाए. से बॉक्स रो अनेक गुडा वायर्स बाहर थाए बा तार गुडा को बाहर थाए. एबो से तार गुडा को विभिन्न सेक्शन को सप्लाई दिया जाय थाए. पीएसबी जोडा कहंदी माने पावर सप्लाई जो विभिन्न सेक्शन को दिया जाय थे. केतला हार्ड डिस्क को दिया जाय थे, केतले मदरबोर्ड को दिया जाय थे, केतले फैन को दिया जाय थे. जहां जहां सिस्टम यूनिट रे व्यवहार होई थाए सेठी जो मेन पावर सप्लाई जोठु होई थाए सेही पाखरे से एसएमपीएस बॉक्स ता लागि थाए एंड ता दिरु सब वायर उडा का विभिन्न सेक्शन को कनेक्शन दिया जाय. सो द फुल फॉर्म ऑफ एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, which of the following program are often delivered to a PC through an email attachment and are often designed to do harm? एमानक भितर को प्रोग्राम ता आमे चाहिले पीसी मानको बा पर्सनल कंप्यूटर को ईमेल अटैचमेंट करी पठै देई परिबा जहा कि स्पेशली उद्देश्य होइता है जे माने कंप्यूटर रो किछि क्षति करिबा बा डाटा फाइल्स गुडा को क्षति करिबा. ऑप्शन ए स्पैम, ऑप्शन बी पोर्टल्स, ऑप्शन सी वायरसेस, ऑप्शन डी रैंसमवेयर एंड ऑप्शन ई नॉन ऑफ दिस. एमानक भितर को प्रोग्राम को डिजाइनिंग करा जाय थाए जहा कि कंप्यूटर रो गोटे ईमेल अटैचमेंट करी जणा को पठै दिया जाय परिबो जहा कि कंप्यूटर ईमेल अटैचमेंट द्वारा जतेला असेसिंग करा जिवो किछि गोटे कंप्यूटर रो बा पीसी रो किछि गोटे कोन बहुत सारा भी प्रॉब्लम्स क्रिएशन करि पारे. दैट थिंग इज नोन एज. इफ एनीवन नो द आंसर सिंपली गिव रेस्पॉन्स बाय चैट. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी वायरसेस. सेगुडा को वायरसेस बोली कहै छै. स्पैम फार्म किछि नुहे ताको हमें वायरसेस बोली कहितौ.
ताले जो वायरस कहूछ वायरस हूँ गोटे स्पेशल टाइप ऑफ प्रोग्राम designed as the intention of corrupting the operating system and the data files of the computer. पूरा पूरी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को क्षति पहुंचेबा सहित कंप्यूटर डाटा फाइल्स गुडा को क्षति पहुंचेबा पई बा करप्ट करिबा पई स्पेशली आकु डिजाइनिंग करा जाय थाए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. व्हिच टाइप ऑफ मेमोरी होल्ड्स ओनली दैट प्रोग्राम एंड डाटा दैट CPU presently processing? Which type of memory holds only that program and data that CPU is presently processing? एमान को भितर को मेमोरीटा हमरो प्रोग्राम गुडा को होल्ड करि थाए जहा CPU करेंटली प्रोसेसिंग करू थाए. ऑप्शन ए ASCII, ऑप्शन बी COMS, ऑप्शन सी RAM, ऑप्शन डी ROM, ऑप्शन ई नॉन ऑफ दिस. जदि जानि पर नथिबो सेमान को फुल फॉर्म गुडा कहि दोछि. ASCII मान होछि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. CMOS माने कंप्लीट मेंटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर. ऑप्शन सी RAM माने होछि रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड ROM माने होछि रीड ओनली मेमोरी. ताले मु कहबा कथा को मेमोरी जो प्रोग्राम गुडा को बा डाटा सेट गुडा का हैंडल करि थाए CPU जोटा प्रेजेंटली प्रोसेसिंग करू थाए. क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच इज द राइट आंसर अमंग दीस ऑप्शंस? The right answer is option C, RAM. RAM is the right answer. Why RAM is the right answer? Random access memory, that is the primary memory. Computer जहाँ किसी काम करी थाए प्रथमे प्राइमरी मेमोरी बा RAM भितरे थाए. आमे चाहिले ताको परमानेंटली स्टोरिंग करिबा पई सेकेंडरी मेमोरी को ट्रांसफर करि परिबा. ताले जहाँ भी हो सेही होची सेही प्रकार मेमोरी जोथरे कि हमर प्रोग्राम गुडा को बा डाटा सेट गुडा को प्रेजेंटली रहिते जहाँ CPU प्रोसेसिंग करू थाए. So RAM cannot store data permanently, only it can store data for the current use. Okay, next question for you. Soft copy is the intangible output. So then what is hard copy? Soft copy माने होची जोटा कहूचे intangible, माने हमें ताको देखि परिबानी, छुई परिबानी, किछ करि परिबा नाही. ताले hard copy रा माने कोन? Option A, the physical parts of the computer. Option B, the printed parts of the computer. Option C, the printed output. Option D, the physical output device. And option E, none of these. Today's class is very important and these are the common things and the questions are very technical way as the exams conducted by the SSC or the CGL or banking exams, different type of exams may be appear. So questions may computer questions may be 8 type रो सब आसी पारे. Okay, soft copy रा माने होची एया, ताले hard copy रा माने कोन? Anyone? Very simple question. Question number 8. The right answer is option C, the printed output. जदि आमे सॉफ्ट कॉपी माने कहूचे इंटेंजिबल ताको देखि परिबा बट ताको छुई परिबानी ताको केते बडा आकार कहि परिबानी ताको स्टोर करके रखि परिबा नाही जेमे कंप्यूटर आमे पिक्चर देखुचे ताको स्टोर करके तो रखि परिबा नाही गीत सुनुचे स्पीकर रे से गीतडा मे बी मेमोरी रे गीतडा स्टोर रहिछि बट सेई जो गीतडा इन बाजुची सेटा को तो आमे स्टोर करि परिबा नाही जहा भी हो तो प्रिंटेड आउटपुट ता जोटा आमे छुई पारुचे तार केते बडा आकार अछि सेटा कहि पारुचे. तो सॉफ्ट कॉपी रा माने जदि इंटेंजिबल आउटपुट ताले हार्ड कॉपी रा माने होची द प्रिंटेड आउटपुट. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. वन निबेल इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स? आमे जानिचे कंप्यूटर रो सबुठारु छोटो मेजरमेंट यूनिट होची बिट. ताले मो प्रश्न होची वन निबेल ता होची केते बिट? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 16 and option E none of these. One nibble is how many bit? गोटे निबेल होची केते बिट? Anyone? The right answer is 4. कारण आमे जानिचे 8 बिट हेले गोटे बाइट हुए. समझे 1024 बाइट हेले गोटे किलोबाइट हुए, 1024 किलोबाइट हेले गोटे मेगाबाइट हुए, 1024 मेगाबाइट हेले गोटे जीगाबाइट हुए, 1024 जीगाबाइट हेले गोटे टेराबाइट हुए. Okay, that may be other things, but question अनुसार मोर थिला गोटे निबेल था होची केते बिट? गोटे निबेल होची 4 बिट. 8 बिट हेले गोटे बाइट हुए. ताले गोटे बिट जो 4 गोटे निबेल जदी कहूचे ताले that is 4 bit. Okay, so option A is the right answer. Okay, next question for you.
व्हाट इज ए फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क रे फायरवॉल रो माने कोन ऑप्शन ए द फिजिकल बाउंड्री ऑफ नेटवर्क ऑप्शन बी an operating system of computer network option C a system designed to prevent unauthorized access option D a web browsing software and option E none of these what is firewall in computer network रे firewall रो माने कोन if anyone know the answer simply give response by chat what is firewall in computer network रे firewall रो माने कोन मो एठी तुमको टिके हिंट्स दे दोछि सो डिफरेंट टर्म यूज कर दिया firewall विंडोज डिफेंडर सुनी थिबो केबे केबे तो मु कहबा कथा firewall रो माने कोन नेटवर्क रे firewall रो माने कोन क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअली firewall ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ए सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस ताले मो एठी जस्ट मु टिके कहि दोछि जेमति कि तमरो कंप्यूटर रे बहुत समय रे हमें अनऑथराइज्ड एक्सेस कर दियंती माने नेटवर्क भितर पसी कि जी चाहि से यूज कर देबो किंतु तमरो देखिबो विंडोज रो कंट्रोल पैनल बा सेटिंग्स भितर को जिवो तो सेटिंग विषय रे गोटे डिफेंडर विंडोज डिफेंडर अछि गोटे फायरवॉल अछि तो डिफेंडर और फायरवॉल को ऑन कर देले हम कंप्यूटर टा टोटली प्रोटेक्शन हो जाय नेटवर्क भितर बा गोटे नेटवर्क भितर हम कंप्यूटर टा पूरा सुरक्षित हो जाय ताले फायरवॉल रो मुख्य काम होला कोनोसी अनऑथराइज्ड बा जहार ऑथराइजेशन नथिबो से नेटवर्क भितर ए सिस्टम रे काम करि परिबो नाही ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ALU वेरी सिंपल क्वेश्चन ALU रो काम कोन ऑप्शन ए स्टोर्स डाटा एंड इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज ऑप्शन बी monitor all computer activities option C perform arithmetic and logical operations option D control computer output such as printing and option E none of the above what is the main function of ALU रो मुख्य कामटा कोन बा ALU रो मुख्य उद्देश्य कोन anyone the main purpose of ALU is perform arithmetic and logical operations CPU what is the that is known as the brain of the computer हमें जो CPU कहउचे बा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहउचे सेटा कंप्यूटर रो ब्रेन बोली कहंती तो CPU has two parts CPU रो दीटा पार्ट थाए गोटे होची तमरो ALU गोटे हला CU रे कंप्यूटर रो समस्त काम कंट्रोल हुए बा कंट्रोलिंग हुए एंड ALU रे कंप्यूटर जते अरिथमेटिकल टास्क एवं लॉजिकल टास्क गुडा को प्रोसेसिंग होची सब किछि ALU भितरे होची ताले ALU रो मुख्य उद्देश्य हला हम कंप्यूटर रो समस्त अरिथमेटिक एवं लॉजिकल टास्क गुडा को कैरी आउट करिबा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू हु इज वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इंटरनेट रो बहुत सारा में प्रोटोकॉल यूज कर प्रोटोकॉल माने द सेट ऑफ रूल्स व्हाटएवर द यूज्ड ओवर इंटरनेट रे जो सेट ऑफ रूल्स को लेके विभिन्न प्रकार काम करा जो विभिन्न प्रोटोकॉल्स काम करूची ताले मोर प्रश्न होची हु इज वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इंटरनेट रो कोटा होची स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल अ बेसिक प्रोटोकॉल ऑप्शन ए TML ऑप्शन बी कोबॉल ऑप्शन सी जावा ऑप्शन डी C++ ऑप्शन E TCP by IP anyone what is the basic protocol or standard protocol of the internet रो basic protocol बा standard protocol कोटा the basic protocol बा standard protocol of internet is TCP by IP transmission control protocol by internet protocol so option E is the right answer TML तो नुहे कोबोल तो गोटे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा भी गोटे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ भी गोटे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सो TCP by IP is the basic protocol used over the internet for the data transmission okay next question for you bridge work at which layer of OSI model हमें जानि छे जेतले नेटवर्किंग करा जे सेतले विभिन्न जिंस गुडा का यूज करा जे जेंदि कि हब रूटर स्विच गेटवे ओके एवरीथिंग एल्स ओके मु कहिबा कथा ए जो ब्रिज ता तमरो काम करे OSI मॉडल रे बा जो हमरो OSI दा जो सातटा लेयर अछि सेटा को लेयर भीतर काम करे ऑप्शन ए नेटवर्क लेयर ऑप्शन बी डाटा लिंक लेयर ऑप्शन सी फिजिकल लेयर ऑप्शन डी एप्लीकेशन लेयर एंड ऑप्शन ई ट्रांसपोर्ट लेयर
को लेयर रे एटा काम करे ओएसआई मॉडल ब्रिज टा हमर ओएसआई मॉडल रो को लेयर रे काम करे एनीवन ओएसआई मॉडल रे ब्रिज टा को लेयर रे काम करे these are the very important questions these are very interesting questions maybe questions come in the exams okay bridge work at which layer of OSI model bridge ता हमर को लेयर रे काम करे bridge आमे जो गोटे नेटवर्क रो आ गोटे नेटवर्क भीतर को जिबा पहिले ब्रिज रो यूज करू ताले से जो नेटवर्क रो ब्रिज यूज करे सेटा को लेयर रे काम करे क्वेश्चन नंबर 13 the right answer is data link layer कारण आमे गोटे नेटवर्क को आ गोटे नेटवर्क से कनेक्टेड करबा ना थ्रू ब्रिज so data link layer रे काम करे okay next question for you a dash is used to direct and dispatch data packets between different networks a dash is used to direct and dispatch data packets between different networks ताले different network भितर data dispatch करिवा पई direct and dispatch करिवा पई आ भितर हमें को जिंसटा यूज करू ऑप्शन ए कनेक्शन ऑप्शन बी ब्रिज ऑप्शन सी गेटवे ऑप्शन डी हब एंड ऑप्शन ई रूटर इ मानको भितर को नेटवर्क डिवाइस टा एथि पई यूज करा जाय a dash is used to direct and dispatch data packets between different network को डाटा जो डिस्ट्रीब्यूट करिवा पई डाटा गुडा को डिस्पैच करिवा पई इ मानको भितर को जिंस यूज करा जाय कनेक्शन ब्रिज गेटवे hub and router these are the various devices networking devices that can be used over a network to efficiently work with the network इमाने ए डिवाइस उडा जदी यूज न हो नेटवर्क रे एफिशिएंट वे रे काम करी हो माने ताले पर्टिकुलरली को डिवाइस ता सेटा यूज करा जे डायरेक्ट एंड डाटा डिस्पैच करिवा पई डिफरेंट नेटवर्क भीतर the right answer is question number 14 the right answer is routing माने से बाटो बतै दबो जे एपडु को जीवा डाटा कि सेपडु को जीवो को रूट रे जीवा डाटा ना रूटर रा सेटा होची काम ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू हु इज द क्रिएटर ऑफ पास्कल लैंग्वेज आमे जो विभिन्न प्रकार लैंग्वेज विषय जानि छे बेसिक कोबोल फोटान पास्कल तले ए जो पास्कल लैंग्वेज रा एक्चुअली डेवलपर किए बा पास्कल लैंग्वेज को किए बाहर करथिले ऑप्शन ए डेनिस रिची ऑप्शन बी ब्रेडन इच ऑप्शन सी जेम्स गुसलिंग ऑप्शन डी Nicholas Wirth and none of these. Actually, you have give on the number question D. Nicholas Wirth. Yes, this is the right answer. Nicholas Wirth. Karan Dennis Ritchie is the father of C language. James Gosling is the father of Java. So Nicholas Wirth is the developer of Pascal language. Okay. Next question for you. Which of the following is the shortcut key or hides the selected rows एमानक भितर कोटा हमें व्यवहार करथाउ सिलेक्टेड रो गुडा का हाइडिंग करिवा पई एमानक भितर कोटा हमें यूज करथाउ रो गुडा को हाइडिंग करिवा पई ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस डी ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एच ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस 9 ऑप्शन डी सी डी कंट्रोल प्लस 10 एंड ई नॉन ऑफ दिस आमे रो गुडा को हाइडिंग करिबा को चाहुचे लुचेबा को चाहुचे ताहले एमानक भितर कोटा को आमे यूज करिबा क्वेश्चन नंबर 16 आमे कोटा यूज करिबा फॉर हाइडिंग द रोज एई रोड तक मता हाइडिंग करिबार अछि लुचेइबार अछि अन्य रोडा को डिस्प्ले करिबार अछि ताले सिलेक्शन कर देली सिलेक्शन कर देला परे मो एमानक भितर को की को प्रेस करले रो गुडा का हाइडिंग हि जिवो कि आंसर दे परिबो एनीवन The right answer is control plus 9. Option C is the right answer. कहीं कि ना तुमको एटी कहि दोउची कंट्रोल से तो डी हला फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करिया पई कंट्रोल से तो ये चला हम जानि छे रिप्लेस पई so the right answer is C control plus 9 is used to hiding the rows. Okay, next question for you. What does the .org domain represents? .org domain कहा को रिप्रेजेंट करे ऑप्शन ए ऑर्गेनाइजेशन डोमेन ऑप्शन बी नेटवर्क डोमेन ऑप्शन सी गवर्नमेंट डोमेन ऑप्शन डी एजुकेशन डोमेन एंड ऑप्शन ई नॉन ऑफ दिस देखो हमर जेहेतु एग्जाम रे बहुत सारा क्वेश्चन आसीबो एंड क्वेश्चन पाई हमको बहुत कम समय भीतर भाबिया को पड़िबो अप्रोक्सीमेटली
37 ରୁ 38 सेकंड भीतर जदी गोटे क्वेश्चन रा हमें आंसर दउचे ताहले हमें सब तक क्वेश्चन एग्जाम रे करिके आसी परिबा नले क्वेश्चन हमहु छाडिया को ही पड़िबो आ क्वेश्चन भी भूल के देले तो माइनस मार्किंग अछि तमे तो जानि दिबो सो आज दैट चेष्टा करो जे 37 टू 38 सेकंड भीतर तार रिप्लाई को रिप्लेसमेंट करिया पे ओके हमें .org डोमेन को काहे की यूज करिथाउ बा कोन पई सेटा यूज करा जाइथे ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी या फिर ऑप्शन ई व्हिच इज द राइट आंसर what does the .org domain represents anyone the right answer is option A organization domain organization रो domain को represent करिया हमर विभिन्न प्रकार डोमेन नेम यूज करा जे गोटेला जेनेरिक डोमेन नेम गोटेला कंट्री स्पेसिफिक डोमेन नेम जेनेरिक डोमेन नेम बिटर .org .biz .net .gov कोनटा जोडा कहउछ .com एभली जिंस व्यवहार करा जे एंड कंट्री स्पेसिफिक डोमेन नेम .in .uk .pk ए टाइप रो जिंस यूज करा जे तले .org डोमेन एग्जैक्टली ऑर्गेनाइजेशन बा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रो साइट रे व्यवहार करा जेते ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेब ब्राउजर एमानक भितर कोउटा होची गोटे वेब ब्राउजर ऑप्शन ए पेंट ऑप्शन बी पावर पॉइंट ऑप्शन सी एस ऑप्शन डी वर्ड एंड ऑप्शन ई ऑल आर वेब ब्राउजर्स व्हिच ऑप्शन इज द राइट आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेब ब्राउजर एमानक भितर कोउटा होची गोटे वेब ब्राउजर द राइट आंसर इज ऑप्शन सी एज माइक्रोसॉफ्ट द्वारा तैयारी करा जायछि एज जोटा कि गोटे वेब ब्राउजर बाकी पेंट टा गोटे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पावर पॉइंट भी गोटे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड वर्ड भी होछि गोटे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो राइट आंसर इज एज ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एमानक भितर कोउटा सेकंड जनरेशन कंप्यूटर रे व्यवहार करा जाउथिला ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब ऑप्शन बी इंटीग्रेटेड सर्किट ऑप्शन सी VLSI option D transistor and option E none of these which of the following is used in second generation of computer एमानक भितर कोउटा सेकंड जनरेशन कंप्यूटर रे यूज करा जाउथिला the basic component of second generation is transistor first generation रे vacuum tube second generation रे transistor third generation रे IC बा integrated circuit fourth generation में VLSI बा very large scale integrated circuit and fifth generation होची ULSI so right answer is transistor option D is the right answer transistor okay next question for you integrated circuit by IC is used in computer are made with integrated circuit by IC जहा कंप्यूटर में यूज करूचे सेटा कोथरे तयारी हिची ऑप्शन ए सिलिकॉन ऑप्शन बी कॉपर ऑप्शन सी एल्युमिनियम ऑप्शन डी gold and option E none of these integrated circuit by IC जोटा हमें गोटे भल जिंस कहिथबो IC टा से IC टा एक्चुअली को मटेरियल रे तयारी बा को उपादान रे तयारी ऑप्शन ए सिलिकॉन ऑप्शन बी कॉपर ऑप्शन सी एल्युमिनियम ऑप्शन डी गोल्ड एंड ऑप्शन ई नॉन ऑफ दीज IC by integrated circuit is made of with silicon option A is the right answer silicon रे आइस्टा तयारी हिची okay next question for you if you wish to limit what we would see on an excel worksheet what data function would you use तमे एमानक भितर को ऑप्शन टा को यूज करिवो बा को फंक्शन टा को यूज करिवो जदी तमे चाहुचो स्पेशली कोनसी गोटे डाटा को देखिया को चाहुचो ताले को फंक्शन जस्ट टिके आगुर मु कहितली पुनी क्वेश्चन टा रिपीट हो जाइछि तो एमानक भितर कोटा हमें यूज करिबा एबे तो जस्ट टिके आगुर भी मु कहिछि ऑब्वियसली कहितली ऑप्शन सी फिल्टर फिल्टर को यूज करा जिवो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू व्हिच ऑफ द मेमोरीज हैज द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम एमानक भितर को मेमोरी रो सबुठारु कम एक्सेस टाइम ऑप्शन ए कैची मेमोरी ऑप्शन बी मैग्नेटिक बबल मेमोरी ऑप्शन सी मैग्नेटिक कोर मेमोरी ऑप्शन डी RAM and none of these एमानक भितर को मेमोरी टा बहुत शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम बा बहुत कम समय एटा एक्सेसिंग करि थाए एनीवन एमानक भितर को मेमोरी टा बहुत शॉर्टेस्ट इंफॉर्मेशन को रखि पारि थाए
Option A is the right answer. Catchy memory. Actually, catchy memory is generally known as catchy, जोटा कि one type of a primary memory, and that can be stored frequently used informations very quickly. तमे बेले बेले देखि थिबो कंप्यूटर रे किछि गोटे काम करिछ, मन कर वर्ड रे मेंचा जिंस टाइपिंग करिछ, कोनोसी कारणवशत तमे कंप्यूटर रे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बंद हे गला, कोनोसी गोटे प्रॉब्लम पाई तमे पुणी नेक्स्ट टाइम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट कला बेले को देखिबो सेतिरे जो 10 लाइन मनकर टाइपिंग करथिलो सेतु 3 रे 4 लाइन बा 5 लाइन पळे आछि, आउ 2-4 लाइन आसु नै, ताले ड्यू टू दैट कैची मेमोरी तमे देखिबा आउ थर बंद करी पुणी स्टार्ट करिवो नॉर्मली रे आउ नथिवो से जेतु कैची मेमोरी जो माने क्विकली असेसिंग करि चले, माने फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंफॉर्मेशन डाटा असेसिंग करि चले, दैट इज एक्चुअली एक्सटेंशन ऑफ द प्राइमरी मेमोरी। मु केबे केबे सुनी छी कोन कैची मेमोरी गोटे कैटेगरी नुहे, दैट इज अ रॉन्ग आंसर। प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी होची दीटा मेमोरी कंप्यूटर, ताले कैची मेमोरी टा होची एक्चुअली सेटा होची प्राइमरी एवं सेकेंडरी मेमोरी भितरे गोटे काम करथे एक्चुअली, किंतु कैटेगरी ऑफ प्राइमरी मेमोरी सेटा प्राइमरी मेमोरी सेतरे इंफॉर्मेशन परमानेंटली रहि परिबो नाही, ताको हमें समटाइम्स कैची बोली भी कहितौ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, व्हाइल ब्राउजिंग द इंटरनेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज्ड टू फुल स्क्रीन व्यू। हमें जदी केबे इंटरनेट रे ब्राउजिंग करूछो को कीटा मारी देले सेटा पूरा पूरी स्क्रीन रे फिल अप होई जिवो। ऑप्शन ए F3, ऑप्शन बी F5, ऑप्शन सी F11, ऑप्शन डी F9 and ऑप्शन E F1. If you browsing internet while the following key, what of the following key is used for the full screen mode? Simply question. एमान भितर कोडा full screen mode पई यूज करा जाय? Anyone? The right answer is option C F11. सब बेले शॉर्टकट की गुडा का एप्लीकेशन वाइज तार भिन्न भिन्न थाए, जेमति कि F11 को तमे टाली रे मारले सेटा होची तमरो कंपनी फीचर्स दबो, तमे जदी कहि दबो एठी आउ गोटे कोन ताले भूल हे जिवो, ताले नेविगेशन की हिसाब रे जतले हमें इंटरनेट रो यूज करूचे कोनसी स्क्रीन को बड़ करिवा कहले मैक्सिमाइज करिवा कहले F11 की तमे मारी परिबो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट इज द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। एबे जस्ट टिके आगु कहितले टिके डिफरेंट वे रे पचारथि, हेक्साडेसिमल नंबरिंग सिस्टम रो बेस बा घातडा केते? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 10 एंड नन ऑफ दिस। हेक्साडेसिमल नंबरिंग सिस्टम रो घातडा केते बा गोटे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम केते घात रे रहि पारे? द राइट आंसर इज 16, 16 घात कहली ना। हेक्साडेसिमल रे 0 ठार 9 पर्यंत रहे एंड F पर्यंत रहे, A ठार F पर्यंत, सो जेहेतु 16 टा अंक रहे तो 16 टा जिंस रहे सेति पय तार घात होची 16। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर, सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिम। बहुत बड़ इंटरेस्टिंग जिंसडा, तमे मोबाइल रे सिम यूज करूछो ताले से सिम रो फुल फॉर्म टा कोन? ऑप्शन ए सब्सक्राइबर आइडल मैकेनिज्म, ऑप्शन बी सेमी आइडल मॉड्यूल, ऑप्शन सी सब्स्टिट्यूट आइडेंटिटी मॉड्यूल, ऑप्शन डी सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल एंड ऑप्शन ई नॉन ऑफ दिस। ऑप्शन ए सब्सक्राइबर आइडल मैकेनिज्म, ऑप्शन बी सेमी आइडल मॉड्यूल, ऑप्शन सी सब्स्टिट्यूट आइडेंटिटी मॉड्यूल एंड ऑप्शन डी सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल एंड ऑप्शन ई नॉन ऑफ दिस। सिम रा एक्चुअली फुल फॉर्म टा कोन? एनीवन कैन गिव द रेस्पॉन्स। हमें मोबाइल फोन रे जो सिम यूज करूछो तार एक्चुअली फुल फॉर्म टा कोन? Anyone? Question number 25, which is the right answer? What is the full form of SIM? The right answer is option D, subscriber identity module। तमरो जो सिम रे देखिबो ता पछरे गोटे 16 अंक विशिष्ट गोटे संख्या पड़े, सेटा काहा सहित सेटा IMEI नंबर बोली कहंती, सेटा काहा सहित केबे काहार मैच करिवो नाही, सो सेही नंबर ता होची मूल जिंस। मोबाइल नंबर ता मैटर नै, मैटर होची तम सिम नंबर ता, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल बा जोटा IMEI नंबर ता। ओके, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज द सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, फुल फॉर्म ऑफ सिम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, हार्मफुल प्रोग्राम्स यूज्ड टू डिस्टर्ब कंप्यूटर ऑपरेशन, गैदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और गेन एक्सेस टू प्राइवेट कंप्यूटर सिस्टम्स आर कॉमनली रेफर्ड टू एज हार्मफुल प्रोग्राम, जहा क्षति पहुंचाए, जो प्रोग्राम गुडा का हम व्यवहार करे जे कंप्यूटर सिस्टम को डिस्टर्ब करि थाए, चलीबारे हो बा कोनोसी इंफॉर्मेशन गुडा को गैदरिंग करिबारे हो बा कोनोसी गोटे प्राइवेट कंप्यूटर पर निजर असेसिंग करिबा को बा कंट्रोल को तार न रखि कि
अन्य गोटे जिनस जे कंट्रोल कर दे पारिबो ताले सेही बडी जिनस को एग्जैक्टली कोन बोली कहंती कंप्यूटर भाषा रे ऑप्शन ए हार्डवेयर ऑप्शन बी मालवेयर ऑप्शन सी कंप्यूटर वायरसेस ऑप्शन डी स्पाईवेयर एंड ऑप्शन ई नॉन ऑफ दिस एग्जैक्टली से जिनसटा को कोन बोली कहंती harmful programs that are specially designed to disturb the computer operation or gather sensitive information or gain access or private computer system are commonly referred to as ताको कौन बोली कहंती anyone that thing is known as malware option B is the right answer ताको malware बोली कहंती वायरस तो कंप्यूटर सिस्टम को प्रॉब्लम करे माने कौन सी डाटा फाइल को करप्ट कर दिए कौन सी डाटा फाइल को मिस यूज कर दिए किंतु एग्जैक्टली से जो टर्म ताको हमें कहते हो दैट इज नोन एज द malware स्पाईवेयर तो नुहे दैट इज नोन एज malware ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ए रिपेयर फॉर ए नोन सॉफ्टवेयर बग यूजुअली अवेलेबल एट नो चार्ज ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड ए डैश ऑप्शन ए वर्जन ऑप्शन बी पैच ऑप्शन सी ट्यूटोरियल ऑप्शन डी FAQ and option E none of these very interesting questions today I have asked to you तुमको बहुत भलो क्वेश्चन गुडा पचारुची बहुत कॉमनली जिंस एग्जाम रे हमें भाबुथौ जे कंप्यूटर रे बहुत किछि जानि छु किंतु हमें किछि जानि नै एम कॉमन जिंस गुडा हमको पचरा जाइथिबो हमें जानि नथले आंसर देई परिबा नाही सो मोर क्वेश्चन नंबर 27 ए रिपेयर फॉर ए नोन सॉफ्टवेयर इज नोन एज बग गोटे सॉफ्टवेयर को हमें रिपेयरिंग करले ताको हमें कहते जो बग माने एरर ताको रिपेयरिंग करिथौ ताले यूजुअली अवेलेबल एट नो चार्ज कोन से चार्ज नबा को निये नाही से आउ ताले हमकु सेटा को कोन बोले एग्जैक्टली हम जिंस कहैथौ वर्जन पैच ट्यूटोरियल FAQ नॉन ऑफ दिस एनीवन what that thing is known as question number 27 what is that thing is known as anyone the right answer is that is known as patch मन को धरी न केबे केबे गोटे सॉफ्टवेयर टा ठीक से चालू नाही आमे ताकू जतले पकेइबा से ताकू कोन करिवे ने पैच करिवे तले पैच माने कोन तमे जेमति मो गाडी लीक हेला पैच पडुची तले गाडी रे पवन रहिबो चक भीतर आंडे चकटा गडिबो आमे एटा जानिले तले एग्जैक्टली जिंस सेया गोटे सॉफ्टवेयर टा कोनोसी कारण वशत बा कोनोसी फाइल मिस ही जाईची बोली से हार्डवेयर ता धरे चली परना तले जो हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर जो संबंधटा बा रिलेशन ता देखिया पई गोटे टेक्निकल यूजर माने गोटे भाषा यूज करन ता कोन कंपैटिबल माने ये हार्डवेयर टा सॉफ्टवेयर पे कंपैटिबल होनी बा ये सॉफ्टवेयर टा हार्डवेयर पे कंपैटिबल होनी ताले सेतले कोन करा जे पैच करा जे पैच माने तमे जंती बाबू साइकिल रबर फबर पकाय जे सॉफ्टवेयर कोडिंग लिखि की ताको पैच करा जे पैच कराले कोन हुए ना सेटा जो एरर टा फिक्सेशन होई जाय आउ तार जो माने वर्किंग क्वालिटी इंप्रूव ही जाय सो दैट थिंग इज नोन एज पैच नॉट FAQ नॉट वर्जन not tutorial anything else that thing is known as patch option B is the right answer okay next question for you out question number 27 by the wrong typing he jaichi but question different achi a dash typically connects personal computers within a very limited geographical area usually within a single building एमान को भीतर कोटा यूज करथाय कंप्यूटर गुडा को पर्सनल कंप्यूटर गुडा को गोटे लिमिटेड जियोग्राफिकल बा गोटे सीमित जगह भितरे धरिनिया गोटे बिल्डिंग भितरे गोटे बड़ बिल्डिंग अछि तार भीतर यूज करा जाए ताले से प्रकार नेटवर्क को कौन बोली कहा जाए ऑप्शन ए LAN ऑप्शन ए फैन ऑप्शन सी TAN ऑप्शन डी WAN एंड ऑप्शन ई VPN गोटे विद इन स्मॉल बिल्डिंग्स पर्सनल कंप्यूटर मान को कनेक्टेड करबा पई हमें जो जिंसटा यूज करिथौ से जिंसटा को एग्जैक्टली टेक्निकल भाषा रे कोन बोली कहा जाए एनीवन क्वेश्चन नंबर 27 DAS is a typically connects personal computers within a very limited geographical area used within a small building. What small building भितरे use करा जाए. Anyone? The right answer is option A LAN. सेटा को local area network बोली कहंती. ताले local area network माने धरिनियो गोटे ऑर्गेनाइजेशन तमर अछि. ऑर्गेनाइजेशन रो 4-5 टा स्टेयर अछि. फर्स्ट स्टेयर डाटा सेकंड स्टेयर रे बता विद इन द सेम स्टेयर भी डाटा ट्रांसफर होई परिबो गोटे स्मॉल एरिया भीतर सेटा हेतिबो तो सेही जो नेटवर्क ता करा जायथाय ताकू LAN बोली कर जे नेटवर्क माने तो समस्त बुझी पारथिबो ना सेवरल कंप्यूटर्स कनेक्टेड विथ ईच अदर फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग डाटा और सॉफ्टवेयर्स डाटा बा सॉफ्टवेयर को परस्पर सहित एक्सचेंज करिया पई जदि कंप्यूटर इंटर कनेक्शन करा जाय बा कंप्यूटर परस्पर सहित कनेक्टेड होंती सेटा को नेटवर्क बोली कहा जाय
ताले से नेटवर्क बहुत प्रकार में जानी छी साइज अनुसार पर्पस अनुसार साइज अनुसार लान वान म्यान प्यान प्यान एमती थाए पर्पस अनुसार कर जे ईपीएन बीपीएन स्यान एमती करा जाए ताले जहा हो गोटे स्मॉल बिल्डिंग भीतर जदी नेटवर्क रो कथा आछि कोने लान बा लोकल एरिया नेटवर्क बोली कहतो फैन किछि नुह फैन घरे हमर लागे प्यान किछि नुह से सूर्य रश्मि पड़िले हमें कला हो तो से सब टर्म गुडा केवल कंफ्यूज करबा पई तमो दिया जाइछि तो LAN is the right answer. Okay, next question for you. Which of the following memory is not need to refresh? एमान को भीतर को मेमोरी टा केबे रिफ्रेशिंग आवश्यक करे नहीं. ऑप्शन ए एस राम, ऑप्शन बी डी राम, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन ई नॉन ऑफ द अबव. Which of the following memories not needs refreshing? एमान को भीतर को मेमोरी टा रिफ्रेशिंग रो आवश्यक करे नहीं. Anyone? एमानक भितर को मेमोरी रिफ्रेशिंग रो आवश्यक करे नहीं. एनीवन कैन गिव रिस्पांस. ऑप्शन ए एस राम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. आमे जो कहले कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी होची राम तार दीटा कैटेगरी जो गोटेला डी राम गोटेला एस राम. डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी केबे रिफ्रेशिंग आवश्यक करे ना काईना सेटा स्टैटिक वे रे करिथाय. एटा तो डायनामिक वे रे डायनामिक माने एबे हितिबो पुनी चेंज किछ कटि कटि जाउतो विद इन मिली सेकेंड्स रे किछ किछ इंफॉर्मेशन कटि कटि जाउतो ताले से कहिया कथा राम रीड एंड राइट तमे सेतरे रीड और राइट करि परछो. रोम रे थिबे इंफॉर्मेशन को जणे केवल रीड करि परिबो रीड ओनली मेमोरी. तो से जो डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहउछो सेटा सबले रिफ्रेशिंग आवश्यक करिवो. रोम भी रिफ्रेशिंग आवश्यक करिवो किंतु एस राम बा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी सेतरे केबे से रिफ्रेशिंग आवश्यक करे नाही. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. व्हाट इज database की यूनिकली आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड विद इन ए टेबल. एमानक भीतर कोटा व्यवहार करा जे यूनिकली आइडेंटिफाई करिया पय रिकॉर्ड गुडा हमें जानि छै database भाषा रे प्रति कॉलम गुडा को गोटे फील्ड बोली कहंती प्रति रो गुडा को गोटे रिकॉर्ड बोली कहंती. तने जहां भी हो से जो यूनिकली रिकॉर्ड गुडा को आइडेंटिफाई करिया पय एक्जेक्टली database भाषा रे को कीटा यूज करा जाम जानते बहुत प्रकार की अछि. फॉरेन की, कैंडिडेट की, सुपर की, अल्टरनेट की, प्राइमरी की, केते कोन कैंडिडेट की बहुत प्रकार की. छाड़ ऑप्शन भीतर अछि हमर ऑप्शन ए रे प्राइमरी की, ऑप्शन बी रे अछि फॉरेन की, ऑप्शन सी रे अछि सेकेंडरी की, ऑप्शन डी रे अछि रिलेशनल की एंड ऑप्शन ई रे अछि नॉन ऑफ दिस. तले मु कहिबा कथा हमर जो डाटाबेस पई यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड करिवा पई को की यूज करा जाय. एनीवन? Question number 29. Which is the right answer? The right answer is option A, that is known as the primary key. Primary key performs the unique identify primary key performs the unique identify function in a relational model. Thus, a null primary key value within a base relation would be like to saying that there was some entity that had a known identity. ताले डाटाबेस पाई जेतला हमें तयारी करू एटलीस्ट कोनोसी गोटे फील्ड पाई हमको प्राइमरी की निश्चित भाबे दबाको पड़िबो. जदी नॉल प्राइमरी की बा कोनोसी प्राइमरी की वैल्यू गोटे फील्ड पाई न दिया जाईछि धरि निया जिवो जे डाटाबेस रे से डाटा रो कोनोसी अस्तित्व अछि बोली. तेनु करी एई जो प्राइमरी की द्वारा हमें डुप्लीकेट एंट्री करि परिबा नाही. डाटाबेस जनरल टेबल रे हमें डुप्लीकेट एंट्री कर देबा गोटे थरा गोटे टाइपिंग करिछि पुनी आउट सेकंड टाइम देला को भी नै जिवो. किंतु डाटाबेस रे एई जो प्राइमरी की दिया जाउथिबा जो गोटे फील्ड पाई गोटे फील्ड एटलीस्ट अलगा रहिबो. सो डुप्लीकेट एंट्री हे परिबो नाही. सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज प्राइमरी की. हमें आउ केतले तक भलो से डिस्कशन करबा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जेतले डिस्कशन करबा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. ए डैश इज a built in mathematical formula included in excel. हमें जेतले एक्सेल रे मैथमेटिकल फार्मूला गुडा को यूज करूचे एमान को भितर कोटा तयारी हिजा हम पई एक्सेल रे जोथरे के हम मैथमेटिकल फंक्शन गुडा को यूज कर परचे. ऑप्शन ए फंक्शन, ऑप्शन बी सेल, ऑप्शन सी फार्मूला, ऑप्शन डी रेंज, ऑप्शन ई नॉन ऑफ दिस. वेरी वेरी कॉमन थिंग्स. हमें बहुत भाबु सहज किंतु सहज नुह. ओके, give your response. A dash is built in mathematical formula included in excel. एमान को भितर कोटा मैथमेटिकल फार्मूला पाई बिल्ड कराइछ बा मैथमेटिकल फार्मूला कहा भितर हमें पाइबा. एनीवन?
The right answer is option A, function. Formula cell तो नुह cell रे तो value हमें करिबा obviously आउ cell रे अछि माने cell रे तो ही calculation होबो cell रे तो किछि mathematical calculation होबो formula तो होची गोटे procedure calculation रो जोतरे कि हमें different arithmetical operator को व्यवहार करिबा and cell reference गुडा को यूज करके विभिन्न प्रकार calculation करिबा एटा तो नुह range तला ए टू ए पर्यंत range माने data range गुडा को नहीं कि हमें जो कोन करछे cell range गुडा को रहउचे ताले कोटा हबो function functions are the special and reserved pre-written formulas already given name for easy use function होची excel रो एई बळी जिंस जोटा कि पूर्वरु हेतिबा कैलकुलेशन गुडा को ना दिहाई कि अछि जहा को तमे ऑफिस सहज रे व्यवहार कर देबे जेंति सम हमको एमति हम अमुको समको समको मिसेया को पड़िबनी डायरेक्ट सम फंक्शन को जाउछ एंड को टू को रेंज ला दे दोछ सो ऑटोमेटिकली से रेंज को मिसे दोछ ताले कैलकुलेशन पूर्वरु हे कि ना दिहाई कि अछि ताले दैट इज नोन एज द इनबिल्ट फंक्शन माने पूर्व तयारी हे कि अछि माने दैट इज नोन एज फंक्शन ओके ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल फीचर allows you to select or highlight all cells that are formulas एमान को भितर एक्सेल रो को फीचर तुमको अलाउ करे सिलेक्ट करिया पई बा हाइलाइटिंग करिया पई समस्त सेल गुडा को जोथरे फार्मूला थाए ऑप्शन ए फाइंड ऑप्शन बी रिप्लेस ऑप्शन सी गो टू ऑप्शन डी गो टू स्पेशल एंड ऑप्शन ई नॉन ऑफ दिस एमान को भितर को जिंसडा एक्सेल रो को फीचर तुमको अलाउ करे सिलेक्ट करिया पई बा हाइलाइटिंग करिवा पई all cells that are formula जो सेल रे फार्मूला गुडा को थिबो anyone can give the response option A option B option C option D or option E which is the right answer question number 31 जो सेल रे हमर फार्मूला थिबो सेही सेल गुडा को हमर हाइलाइटिंग हबो ताले हमें को ऑप्शन को गले एटा हबो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर गो टू स्पेशल ऑप्शन ए तो फाइंड माने हला स्पेसिफाई लेखा खोजिया पे रिप्लेस माने हला गोटे लेखा जगह रे अलगा गोटे लेखा को रिप्लेसमेंट करिया पे गो टू हला हमें को सेल को जिबा किंतु स्पेशली को सेल रे फार्मूला गुडा का हमर एंट्री हिची सेही सेल गुडा केवल हाइलाइटिंग हो जेडा बड वर्कशीट थाउ ताले सेडा अछि कोटी गो टू स्पेशल भीतर गो टू स्पेशल बहुच होम टैब भीतर अछि एंड देखिबो सेठी जो हमर फाइंड रिप्लेस तारि पाखा बकी अछि तार यूज था होची स्पेशली यूज था होची एया ओके What is the maximum zoom percentage allowed in Microsoft PowerPoint 2007? Microsoft PowerPoint 2007 version रे zoom percentage ता केते बहुत इंटरेस्टिंग जिंस आ बहुत इजियर जिंस कॉमनली भी बेले बेले पचरा जाए किंतु हमें टिके टिके न देखिते भूल करके पड़े आसु What is the maximum zoom percentage allowed in Microsoft PowerPoint 2007? 2007 रे Microsoft PowerPoint रो maximum zoom percentage केते बा maximum में केते zoom करि परिबा Anyone? The maximum zoom percentage over the Microsoft PowerPoint is option D 400%. केवल Microsoft कंपनी रो Microsoft Word रे हमें zoom 500 पर्यंत करि परिबा बा 500% पर्यंत जाई परिबा किंतु अदर देन Excel PowerPoint ए सारा जिंस गुडा को 400 पर्यंत zoom percentage जाई परिबो so option D is the right answer 400%. Okay, next question for you. In Microsoft Word 2010, the feature for Microsoft Word count is available in grouping under which of the following tab? एमान को भितर को टैब रहे Microsoft Word रो Word count function grouping option under रे अछि. Option A home tab, option B review tab, option C insert tab, option D view tab and option E reference tab. एमान को भितर को टैब रो grouping group रे word count अछि Microsoft Word रो anyone can give the response बहुत इंटरेस्टिंग जिंस बहुत टेक्निकल जिंस एंड बहुत इंपोर्टेंट जिंस भी in Microsoft Word 2010 the feature for word count is available under grouping in which tab anyone the right answer is ऑप्शन बी रिव्यू टैब रे प्रूफिंग बोली गोटे ग्रुप अछि से प्रूफिंग ग्रुप भितरे वर्ड काउंट अछि वर्ड काउंट रो काम होला काउंट्स द नंबर ऑफ पेजेस कैरेक्टर्स पैराग्राफ्स लाइंस व्हाटएवर यूज्ड इन ए डॉक्यूमेंट हम डॉक्यूमेंट टोटल स्टैटिस्टिक्स ता कोन अछि सब किछि वर्ड काउंट रे जणा पड़ी छै आ वर्ड काउंट ता रिव्यू टैब रो प्रूफिंग ग्रुप भितरे अछि ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर रिव्यू टैब नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू A computer cannot boot
if it does not have the computer तम booting हे परिबनी booting माने कोन जोटा starting कोहंती मो ROM रो instruction को नै की कहि देबी जदी तमे हि जिवो डाउट क्लियर ओके खाली एति मते को कंप्यूटर बूट हे परिबनी जदी सेतरे कोन नथिबो ऑप्शन ए कंपाइलर ऑप्शन बी लोडर ऑप्शन सी operating system option D assembler and option E none of these a computer cannot boot boot माने जो आमे जो जोता बिंदु जेनुहे boot माने start तो कंप्यूटर boot हे परिबो नाही जदी कंप्यूटर रे कोन नथिबो anyone a computer cannot boot if it doesn't have yes anyone कंप्यूटर बूटिंग होबनी स्टार्टिंग होबनी सिंपली सेतरे जदी ऑपरेटिंग सिस्टम बा ओएस नथिबो ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स व्हिच कंट्रोल्स द ओवरऑल ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम रा काम होला कंप्यूटर रो ओवरऑल काम को कंट्रोल करिबा सो ऑपरेटिंग सिस्टम जदी नथिबो बा ओएस जदी नथिबो कंप्यूटर बूटिंग ही होबनी कंप्यूटर स्टार्टिंग ही होबनी कंप्यूटर कोन हम मोबाइल रे भी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड अछि बा जो तमे कहउछो कोनटा सीटा जोटा कहती हमर आईफोन रे व्यवहार करछो तमे जो आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम से जहां भी हो से ओएस बिना ही कोन सिस्टम चलीबार बा बूटिंग होबार प्रश्न ही उठु नै सो कंप्यूटर बूटिंग ही परिबनी जदी ओएस नथिबो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू आईएसडीएन स्टैंडर्ड स्टैंड्स फॉर आईएसडीएन मु जस्ट के आगु कहउतली आईएसडीएन रो फुल फॉर्म ता कोन ऑप्शन ए इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क ऑप्शन बी इंटीग्रेटेड सर्विसेज डाटा नेटवर्क ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी डिजिटल नेटवर्क ऑप्शन डी इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी डाटा नेटवर्क एंड नॉन ऑफ दिस आईएसडीएन स्टैंड्स फॉर आईएसडीएन रो माने कोन क्वेश्चन नंबर 35 व्हाट इज द आंसर ऑफ आईएसडीएन द राइट आंसर इज ऑप्शन ए integrated services digital network ISDN number amar so pade tum dekhtibo okay next question for you what type of resource is mostly like to be a shared common resource in a computer network emanako bitru koota gote computer network re common resource sharing kare option A keyboard option B speaker option C floppy disk drive option D printer option E none of these what type of resource is mostly like to be shared common resource in a computer network रे common resource की sharing करे ठीक है क्विकली प्रोसेसिंग करिबा काहे कि ना समय सरी आसुची एंड क्वेश्चन भी हमको डिस्कशन दे करिबा को पड़िबो कि एमान को भितरु शेयरिंग करे क्वेश्चन नंबर 36 प्रिंटर ही कॉमन रिसोर्स शेयरिंग करि परिबो आउ के हिनवे कारण आउ जोटा सेटा हे परिबो बट आउ गोटे मन कर जिंस रे मन कर लैपटॉप रे लागि छि नेटवर्क रे शामिल अछि मो एपट जदी प्रिंटर रे चाहिबी प्रिंटिंग बाहर कर दे परिबी सो कॉमन रिसोर्स शेयरिंग करिबा पय हेले प्रिंटर टा होची सुइटेबल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू द मोस्ट वाइडली यूज्ड टाइप ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज एमान को भितर को डाटाबेस सिस्टम टा को अधिक यूज करा जाय ऑप्शन ए फ्लैट डाटाबेस ऑप्शन बी नेटवर्क डाटाबेस ऑप्शन सी रिलेशनल डाटाबेस ऑप्शन डी हायरार्चिकल डाटाबेस ऑप्शन ई नॉन ऑफ द अबव एमान को भितर को डाटाबेस सिस्टम को अधिक यूज करा जाय very common things very knowledgeous things and very important things एमान को भितर को डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को अधिक व्यवहार करा जाय anyone the right answer is option C relational database तमे देखु ना SQL जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज कहउछ तमे जो MS एक्सेस कहउछ बा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस कहउछ ऑल आर वाइडली यूज्ड डाटाबेस सिस्टम एई मान को व्यवहार करिके डाटाबेस सब तयारी करा जाय आले एगुडा सब कोन कोन गोटे RDBMS बा रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर रिलेशनल डाटाबेस को ही अधिक यूज करा जाय हमें आउ विषय केबे भलो से डिस्कशन करबा खाली जस्ट ठीक मो क्वेश्चन आंसर इलाबोरेट करि दोछि ओके managers use sophisticated tool to combat cyber stacking especially involving the internet such as tools include manager माने व्यवहार करंती गोटे sophisticated tool जहा कि cyber stacking को हमरो ये करे ताले एटा को कोन बोली एग्जैक्टली हमें कहतो ऑप्शन ए वेब फिल्टर्स ऑप्शन बी सुपर विजिलेंस सॉफ्टवेयर ऑप्शन सी proxy server ऑप्शन डी पैकेट स्नीपर एंड ऑप्शन ई ऑल ऑफ द अबव मैनेजर माने व्यवहार करंदी साइबर स्टैकिंग को व्यवहार
करिया पे अच्छा तम मन रे एठी गोटे तम मन रे गोटे पळे आसो साइबर स्टैकिंग माने कोन हम तो बहुत प्रकार जानि छी साइबर क्राइम गुला सब यूज करा जाय से जहा साइबर स्टैकिंग गोटे ता भितर एभली जिंस जो कि एम्प्लॉई यूज करिथाय वर्क कंप्यूटर गुडा माने ऑर्गेनाइजेशन रो कंप्यूटर को यूज करिथाय एवं अदर रिसोर्स गुडा बा अन्य रिसोर्स गुडा यूज करिथाय ता डेली काम पाई की एवं को समय रे काम करिया कथा जतले नॉन वर्क पर्पज रे यूज करिवो माने माने जो ऑर्गन माने जे हम कोन ओनर सब जिनस को यूज करिकी सेता काम करि परिबो ताले सेटा को एग्जैक्टली हमें कोन बोली कहिताउ से जिनसटा कोन बोली कह जाय थाए ऑप्शन ई ऑल ऑफ द अबव सब जिनस गुडा हमर यूज हेते या भितरु माने आइडेंटिटी गेन करिवो पासवर्ड को ब्रोक करिवो डिवाइस गुडा का यूज करिवो तो सब प्रकार जिनस को यूज हे करथाय से ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू the altering of data so that it is not usable unless the changes are undone each एमानक भितर को से जिनसटा अल्टरनेटिव मान चेंज करिवा डाटा गुडा को जहा कि अनयूजेबल हे जिवो unless changes are made चेंज न होला पर्यंत एमानक भितर कोटा यूज करा जाय जोटा कि डाटा गुडा को जने रीड करि परिबो नाही बा चेंज न होला पर्यंत काम हेई परिबो नाही से जिनसटा कोन बोली कहंती ऑप्शन ए बायोमेट्रिक्स ऑप्शन बी कंप्रेशन ऑप्शन सी एन्क्रिप्शन option D ergonomics and option E spamming anyone से जिनसटा को एग्जैक्टली कौन बोली कहा जाए एग्जैक्टली से जिनसटा को कहा जाए ऑप्शन सी एन्क्रिप्शन हम जाने न बेले बेले चिपर टेक्स्ट हे जाए माने जेंति उदाहरण स्वरूप जने अन्य लोक देखले प्लेन टेक्स्ट रे देखिबो किंतु अन्य मानक पय सेटा चिपर टेक्स्ट जेबे जेंति 29 EFD एम दे कि मेंचाय कोन लिखि जिवो चिपर टेक्स्ट जे पर्यंत नॉर्मल टेक्स्ट को कन्वर्ट न होईची जने साधारण लोक तक बुझी परिबोनी केवल सेही सिक्योरिटी पय एटा यूज करा जाय माने जो हमर नॉर्मल लेखा उडा को सेटा चिपर टेक्स्ट को कन्वर्ट हे जाय चिपर टेक्स्ट को कन्वर्ट हे गेला परे सेटा होएनी ताले डिक्रिप्शन हेला परे ही डाटा रीड होबो सो डाटा ताको कहते डाटा एन्क्रिप्शन तो जो टर्म टा कहते डाटा एन्क्रिप्शन जहा कि चिपर टेक्स्ट को कन्वर्ट कर दी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर क्लोजिंग ए टैब ऑन द ब्राउजर ब्राउजर रे गोटे टैब को क्लोज करबा को हेले एमानक भितर को जिनसडा को हम यूज करू ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस टी ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस डब्ल्यू ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस ए ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस वाई एंड ऑप्शन ई ऑल प्लस F4 एमानक भितर को जिनसडा हम यूज करि थाउ जे डाटा टैब को क्लोज करबा पय ब्राउजर रे एनीवन को टूल टा को यूज करा जाय थाए जे डाटा को क्लोज करबा पय द राइट आंसर इज हमर कंट्रोल प्लस डब्ल्यू ऑप्शन बी इज द राइट आंसर कारण ऑल से तो F4 मार दिले एप्लीकेशन टा टोटल बंद हे जाय किंतु एप्लीकेशन टा बंद होबा नाही एप्लीकेशन टा बंद होबा नाही केवल क्लोज होबो ताले सेटा कोच कंट्रोल प्लस डब्ल्यू मारी देले हमर सेटा क्लोज हे जाय ओके द टाइम इज वेरी शॉर्ट बहुत शीघ्र भी समय पळैला हम जानि परले नाही जहाँ भी हो हमें बहुत सारा जिनस आज डिस्कशन कले नेक्स्ट ट्रिप पुणी ट्राई करी तुम आहरी बहुत सारा भल सारा जिनस गुड़ा नहीं आसपा तो दिस क्लास इज ओवर फॉर टुडे थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग दिस क्लास